सिटी टीवी ऑटो शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट मुग्धा मिश्रा और मैं हूं इस वक्त नैप ट्रैक्स में, जहां पर हम चलाने आए हैं Volkswagen Golf GTI, जिसका रिव्यू सबसे पहले आपके लिए लेकर आ रहे हैं मोहित भारद्वाज। In the era where every hatchback calls itself a hot hatch, there is one which has managed to stand tall to this claim. It is called the Volkswagen Golf GTI. Now this car is fast. I'm not just talking about the performance. मैं बात कर रहा हूँ sales की. So only 150 of these are allocated for the Indian market as of now, and the first batch is already sold out. Now the Golf GTI, if I have to talk of breakfast, feels like an American one. It feels crisp, indulging and tasty to look at least on the paper. Whereas the existing hot hatches, they're just toast with no taste and no attitude. But we're gonna find out how good the Golf GTI is at this Natrex facility in Indore. So let's get this started. So it looks very elegant. आपको एक understated appeal इस गाड़ी के साथ मिलती है. And if you have always wanted a car that looks a little sleeper like, this is something you'll really like. Now over to the front, आपको एक connected LED DRL pattern मिल जाता है, and you're also getting this large chunky Volkswagen logo. Now lower down the bumper section, you get a lot of black treatment, and with a grille that reminds you of a honeycomb mesh. Now move towards the side. I'm sure you will like the design of this car even more because it is not a small car like the Polo. It is longer, in fact it is wider, but it's a low slung car nonetheless. Now taking a look at the rear section of this car, what I think that I like the most are these slender looking tail lamps. Also the dual exhaust tips, they add to the sportier appeal of the Golf GTI. Close the door, and just like every other Volkswagen, it closes with a very solidifying third. Now talking of other elements that you're getting on the inside, I'll start off with this leather wrapped steering wheel. So it's a GTI unit, it's chunky to hold on to and comes with these perforated treatment so that there's enough grip all the time. उसी के साथ आपको एक 12.9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट मिल जाता है और एक 10.25 इंच का आपको मिलता है ड्राइवर डिस्प्ले. Now these are sport seat and they come with Alcantara touch at a few parts, but otherwise they are done in textile material. Nonetheless, they are very supportive and they hug you really tight so that you're not moving around when you're hustling the car on a serpentine track. And I bet Volkswagen knew that Indians are very much in love with the sunroof, so you get one, but it's not a panoramic unit. Now talking of space, आपको अच्छा खासा space मिल जाता है. I'm 5 feet 6 inches for reference. I have a decent amount of headroom, and anybody who's taller than me will not find any issues on at least the front row in terms of headroom, legroom, knee room. But how are the things on the rear seats? Let's find that out. The front seat is set to my driving position, and again I have ample amount of knee room, leg room and headroom is not an issue for me. Now 3 people can sit abreast here, but there's a huge transmission tunnel that protrudes into the footwell area. Also getting rear AC vents and 2 Type-C charger, which is an interesting bit. Another interesting affair here are these seat backs. So you get 2 phone pockets along with a magazine holder here, and if you thought the car doesn't feel luxurious enough, the door pads do come with this Alcantara treatment, but nonetheless this plastic is soft touch on the topmost part of the cabin, but as you go lower down it starts getting scratchy, and you're treated with a rear seat armrest. So now we are finally driving the Volkswagen Golf GTI and on the Indian soil here at Natrex's handling track. We earlier drove it on the high-speed track of the facility where we could do top speeds of around 267 kmph. All thanks to its powerful 2-liter 4-cylinder turbo petrol motor जो कि बनाती है 265 horsepower along with 370 Newton meters of max torque. Now all of these numbers are channeled to the wheels via a 7-speed dual clutch gearbox.
Also, the 0 to 100 kmph sprint takes only 5.9 seconds. Even with 3 occupants in place, there was no sign of the car throwing tantrums in terms of stability whatsoever. उसी के साथ आपको एक काफ़ी अच्छा braking setup मिल जाता है. You get discs on all 4 ends which offer you a great bite and bringing the car to a stop exactly where you want it. So dropping anchors will not be a tough job on the Golf GTI. And if you're thinking that it is running on a closed ratio gearbox, that's not what the case is, because even at 267 kmph in the 7th gear, the engine was revving at around only 4200 clicks. Now what that means, high speed cruising in this car will be a child's play. Also, it comes with level 2 ADAS with a slew of functions, and what that means that the car can brake on its own. Also, you are getting adaptive cruise control along with lane keep assist. Well, this one is certainly a hot hatch and not a mild one, and I have to say that I am impressed with the way Golf GTI performs. Should you consider this car over the Mini Cooper S? Well, I have a few things to say. मुझे लगता है कि ये एक ज़्यादा प्रैक्टिकल और ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार है in comparison to the Cooper S, which remains largely a 2+2 seater hatchback, while this one comes with seating for 5 occupants. And on that note, I think this could be your perfect daily driver and a weekend car that you can be a hooligan in it. Hello and welcome to NDTV Auto. I am Anirban, and today I have a specimen with me which is a dying breed. It's called hatchbacks. In fact, few manufacturers are there who are still having faith on these compact cars, which effectively are taken over by SUVs these days. This is the Tata Altroz facelift. The prices start at 6,90,000, goes all the way to 11.5 lakh rupees ex-showroom. From a distance, I'm sure you're enjoying the view, the nature, but you have to come close to understand what has actually changed in the Altroz facelift. Now, when you come up close, you will see there are distinct changes on the face. Starting off with the grille, there is this piano finish, which gives it a glimmer. यहाँ पे horizontal elements का usage हो रहा है. Again, this gives it a width. और similar horizontal elements आपको lower half bumper पे भी दिख जाएंगे. There is camera right in the center, which signifies now the Altroz gets 360-degree camera with its top-end variants. Onto the side, the design cues are more prominent. 16-inch alloy wheels, the shade is different, and this reminds me थोड़ा EV type का look आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा. Change side profile में भी दिया गया है. This was more chunkier before, आंखों को चुभता था, has been reduced, काफी slimmer section दिया गया है this applique, and I think it's nicely complemented by these flush door handles. Over to the rear, again Tata is following the design language they are giving with Nexon and other SUVs. It gets a connected light strip. पहले के मुकाबले looking better. पहले का मुझे लगता था ये जो portion था that bulged out even further, quite sore to the eyes. But now थोड़ा सा इसे subtle करने की कोशिश की गई है. The height of the bulge has been reduced. Front की तरह rear bumper भी थोड़ा सा change कर दिया गया है, and you have this placement of brake lamp right at that dead center. चेहरे की तरह आपको कैबिन के अंदर भी एक नयापन दिखेगा. कुछ फीचर्स में हेराफेरी की गई है और यहाँ पे लेआउट आपको डैशबोर्ड का बिल्कुल फ्रेश सा दिखाई पड़ेगा. कुछ फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे अब 10.25 इंच का मेन डिस्प्ले आ चुका है. ये फ्री फ्लोटिंग बेजल काफी पतला सा दिया गया है, ये आ चुका है. फीडबैक अच्छा है, 360 डिग्री कैमरा भी आपको मिलेगा. एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले आप वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं. फोन को आप रख सकते हैं वायरलेस चार्जिंग पे. साथ ही साथ सनरूफ भी दिया गया है. छोटा सा सनरूफ है, लेकिन केबिन को ये काफी एयरी बनाता है. हालांकि जो स्टीयरिंग व्हील है ये बदल चुका है. ये स्टीयरिंग व्हील हमने देखा है नेक्सॉन और ऊपर की टाटा की गाड़ियों में जो आता है वही अब अल्ट्रॉस में भी मिलेगा. एक इल्यूमिनेटेड पैनल बीचों बीच दिया गया है. टाटा का लोगो डिजिटल में फिनिश है. क्रूज कंट्रोल हायर एंड वेरिएंट्स में आपको मिल जाएगा. मेरे सामने भी जो डिस्प्ले दिया गया है ड्राइवर्स डिस्प्ले, ये फुली डिजिटल है. ये भी
10.25 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। वही आपको वाइड एंगल ओपन वाले डोर्स मिल जाएंगे, 90 डिग्रीज ओपन होते हैं और मतलब गाड़ी के अंदर आना या फिर बाहर निकलना आसान बन जाता है। अपर्चर आपको ज्यादा मिलता है। हेडरूम बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, कॉम्पैक्ट गाड़ी है, वैसे ही मतलब व्हील बेस 2501 मिलीमीटर का मिलता है। तो मेरे हाइट के हिसाब से 5 फुट 8 इंच फ्रंट सीट मैंने अपने हिसाब से रखा है, तो मैं बहुत ज़्यादा तो लेग मूवमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अच्छी बात है फ्लैट फ्लोर मिल जाता है। ये एक मिड लाइफ फेसलिफ्ट है और टाटा मोटर्स ने कोई तब्दीलियां नहीं की हैं एल्ट्रॉस के पावर ट्रेन में। हालांकि एक AMT गियरबॉक्स, ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन हम कहते हैं, एक ऑटोमेटेड क्लच वाला एक बेसिक ऑटोमेटिक गियरबॉक्स अब कंपनी ने पेट्रोल वेरिएंट के साथ जोड़ दिया है, विच इज रफली 60,000 रुपीज एक्सपेंसिव ओवर इट्स करस्पॉन्डिंग मैनुअल ट्रिम। हालांकि उस गियरबॉक्स को आज हमें चलाने का मौका नहीं मिला। What we drove is the 1.2 liter 3-cylinder petrol engine which gets option of एक 5-speed manual transmission। इसी इंजन के साथ आपको बेस वेरिएंट्स में AMT का ऑप्शन मिलता है और हायर वेरिएंट्स में आपको मिल जाएगा एक DCT का विकल्प। DCT की बात करें तो 1,25,000 रुपए एक्स्ट्रा आपको चुकाने पड़ेंगे। CNG का भी आपको अवसर मिल जाएगा और CNG के लिए आपको लगभग 1 लाख से 1,10,000 रुपए एक्स्ट्रा चुकाने पड़ेंगे ओवर कोरेस्पॉन्डिंग पेट्रोल ओनली ट्रिम। ये पेट्रोल इंजन बनाता है 88 हॉर्स पावर, वहीं जब प्योर CNG मोड में इस गाड़ी को चलाया जाए तो पावर ड्रॉप होके लगभग 74 हॉर्स पावर रह जाता है। पेट्रोल मोटर काफी पेपी है, रिफाइनमेंट में आपको थोड़ी सी शिकायतें रह सकती हैं, उतनी ज्यादा स्मूथ फील नहीं होगी, लेकिन आपको यूजेबल पावर और टॉर्क मिल जाएगा फॉर सिटी राइडिंग। कुछ वक्त हमने डीजल एल्ट्रॉस के साथ भी बिताया। डू चेक आउट आवर एक्सपीरियंस। This is the only hatchback in the market where you get a powerful torquey diesel engine। वही सेम 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल मिल जाता है, जिसे जोड़ा गया है एक 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ। पहले की जैसे ही आपको अच्छा खासा टॉर्क बैंड दिख जाएगा, स्पेशली लो रेव से। इसका यही मतलब होता है सिटी में ओवरटेक करना आसान है। हाईवे पे आप इसे क्रूज कर सकते हैं एट ट्रिपल डिजिट स्पीड्स, आपको वही टॉर्क रश फील होगा। माइलेज भी ये गाड़ी अच्छा निकाल के देती है। हाईवेज पे आप 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर ऑफ डीजल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डीजल लेते हैं, द डाउनसाइड इज द NVH लेवल। स्पेशली जब आप रेव करते हैं, कैबिन के अंदर आपको ढेर सारा डिस्टर्बेंस सुनाई देगा, जस्ट लाइक दिस। बट देन चाहे आप पेट्रोल लें, CNG लें या फिर डीजल, what really comes standard and established with the Altroz is safety features। आपको 6 एयरबैग्स विद ESP स्टैंडर्ड मिल जाते हैं और साथ ही साथ 5-स्टार GNCAP क्रैश टेस्ट द्वारा एक प्रॉपर स्टैम्प which makes it one of the safest cars in the Indian market। The design looks familiar। कैबिन में कुछ फेरबदल किए गए हैं, फीचर्स ऑब्वियसली पहले से बढ़ चुके हैं एंड फॉर गुड रीजंस आई फील फ्रेश इनसाइड द कैबिन। ड्राइव पहले की तरह ही सॉलिड है, एश्योरिंग है। आपको स्ट्रॉन्ग इंजन ऑप्शंस मिल जाएंगे विद एल्ट्रॉस, बट इज इट इनफ टू पुल यू टू अ टाटा डीलरशिप एंड गेट वन ऑफ दीज फॉर योरसेल्फ? Well, I don't know. I think it's a very modest attempt. The customer preferences are changing thick and fast, and on top of it, SUV का चलन इतना ज़्यादा है मार्केट में, इतना ज़्यादा लोग रुझान बना रहे हैं सब कॉम्पैक्ट SUVs की तरह। I think cars like this are overlooked. It's a lovely windy day here in Bangalore and we are at Mecco Cartopia to ride the Suzuki E-Axis, one of the most anticipated electric scooter launches in 2025. So we've been riding the scooter at Mecco Cartopia. It's a tight technical go-kart track, some nice curves and some straights as well. And the first thing that comes to mind
is how nimble and agile the E-axis is. When you lean it too hard, you're in the danger of scraping the center stand and you might have a nervy moment there. But, well, when you're leaning it into a corner, the grip from the tires is really nice and you feel confident, and the scooter is egging you to go faster into a corner. Now, the first ever electric scooter from Suzuki carries a simple clutter-free design, and yes, it does look different from the Axis 125. The E-Axis has a sharper front end with a sleeker LED headlight and a vertical DRL running down the front apron. The E-Axis weighs in at 122 kg, which is relatively light and has a seat height of 765 mm, and the ground clearance is a decent 160 mm. The space under the seat is less than that of some of its rivals, but is enough to pack in some groceries and a small sized half-face helmet. In terms of features, there is a 4.2-inch TFT LCD screen which offers good legibility, and you get features like smartphone app connectivity, 3 riding modes which are Eco, Ride Mode A and Ride Mode B, where the Mode A gets stronger regen. Both modes offer a top speed of 71 km per hour, while the top speed in Eco mode is 55 km per hour. Then there is a reverse mode as well, but on a scooter this light, it isn't entirely unnecessary. Now the E-Axis gets a 3.072 kWh LFP battery, which offers a claimed range of 95 km. Real world range can be expected to be around 75 to 80 km depending on your usage. We were going pretty hard around the track, which meant that the battery levels were dropping quickly. Peak power output is 4.1 kW and the peak torque output is 15 Newton meters. There are 2 ways to charge the E-Axis. First is through a portable charger, which takes 6 hours and 20 minutes to charge from 0 to 100%, and 0 to 80% is done in 4 hours and 30 minutes. Should you opt for a DC fast charger, then the 0 to 100% charge takes 2 hours 12 minutes, while you can charge up to 80% in just an hour and 12 minutes. So the prices of the E-Axis are yet to be revealed, but when the scooter is launched, it will go up against the likes of the TVS iQube, Bajaj Chetak and the Ather Rizta. It is positioned as a family scooter, an electrified derivative of the Axis 125, so to say. And yes, we think the scooter has the potential to do really well in the Indian market, provided it is priced right. वेल आज के शो में इतना ही, लेकिन आप ऑटो रिलेटेड कंटेंट लगातार देखने के लिए एनडीटीवी ऑटो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वो बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे सारे अपलोड्स की जानकारी आप तक पहुंचे तुरंत। आप अपने फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए ड्राइव सेफ एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।